clarify this. What is the exact meaning of veteran? बालों में ज्यादा ग्रेज है तो ये बेसिकली वही है. ना फिल्म बनाने वालों को बस टाइम है और ना देखने वालों को बस टाइम है. Protect my daughter and I want to make sure she does well. सुजीत कुमार को ग्रेट क्या मिला? कुमार को तब मैं उसकी आंखों में वो मोहब्बत देखना चाहता हूँ इस कैरेक्टर के. Hello, hi, this is Bhavna and you're watching India Today. I have the amazing cast of Popcorn with me right here. Welcome all of you. Kunal, hello. Johnny sir, Chunky Panday, Saurabh Shukla, Jamie and Nupur Sanan here. Firstly, a huge welcome. Hi. मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो गाना सुना पॉपकॉर्न वाला एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग इट. उसके बाद इमीडिएटली मैंने पठान वाला टीजर देखा आप लोगों का जो वो स्पूफ जो क्रिएट किया एंड आई लाफ्ड माय गट्स आउट. आई वाज लाइक वाओ एंड इट इज सो एप्ट. आई मीन सौरभ सर एंड जॉनी सर डूइंग दैट इज सो एप्ट कि मतलब मत दो. मैं आपको बोलना चाहती हूँ एज एन ऑडियंस 30 साल हो गए कोई बात नहीं बट don't give this to anyone else. You all are the best when you do it together. But I want to know, you know, like they said, comedy is something which disarms people. Like you can say the trickiest of things but in a comic manner and people still are able to digest that. The first thing is to be able to laugh at yourself, which a lot of people find it very difficult too. We'll start with the veterans first because I want to know when you all first started this, was it difficult? Because you know, मुझे ऐसा लगता है मैं आज भी शायद हर चीज़ पे अपने आप पे इतना नहीं हंस सकती. It's very difficult for me. What was that like for you that first time? Just before you ask this question, let's clarify this. What is the exact meaning of veteran? Someone who has a lot of बेसिकली experience. 50 के ऊपर अगर आप हैं. No, 50 के ऊपर हैं? Not at all, sir. For me, I think my meaning would be that who has a lot of experience that is unmatched. नहीं सर ऐसा अगर आपके बालों में ज्यादा ग्रेज है तो ये बेसिकली वही है. अभी इसको शुगर कोट कर रही है. बिल्कुल भी नहीं. मैं शुगर कोट करती नहीं. सर ठीक है फिर ये जो कह रही है सच मान लीजिए. Because this is not funny. The word veteran is सर not. but you have to laugh at yourself. आपको खुद पे हंसना है इसने मैं इसीलिए अंदर तो बहुत हंस रहा हूँ. सर लपेट के दिया इसने सवाल. आप ले लीजिए इसको. मेरे को आई थॉट वेटरनरी सर्जन बुला रहे मेरे को. हाँ आपके लिए वेटरनरी सर्जन है उनके लिए वेटरनरी. So basically they're just, I mean, I don't know Saurabh sir seriously बोल रहे हैं कि नहीं but मुझे serious ऐसा है लग भाई, रहा है ये तो कि मैं थोड़ा नलिफाई कर रहा हूँ तो भड़क जाता है. really हाँ ये पहले 5 कैमरा थे सुबह अब 4 बजे. मर्डर हो गया. सर मैं सीरियस हो जाऊंगी अभी. नहीं ऐसा ठीक है मैं बचा लूंगा बट मैं सच्ची बोल रहा हूँ पहले 5 कैमरा थे अब 4 है तो हो गया. No, but I want to know, I mean, coming back to the question, I want to know that disarming, when did that happen for you? Did it take a while to be able to get into the groove of being able to laugh at anything or on yourself? Was that a process or it just happened very naturally and organically? फोन नहीं मारना फोन नीचे रख. I have to disarm you before you answer this question. What? Sorry, come again. No, I'm saying, what was that process, like your time when you started this, what was it like for you? Was that process difficult? Because आज easily आ जाता है आपके लिए, but शायद पहला या second film में was it easy? Kunal is just like फ्लैशबैक में चलते हैं. हाँ फ्लैशबैक में कॉमेडी. जॉनी सर प्लीज आप सबसे सीनियर हो. I'll just change बट it. जॉनी जी ने हमें बताया हिज होल जर्नी हाउ वो कैमरा के सामने पहली बार आए और दैट इज अ हिलेरियस स्टोरी. नहीं बट वो सर क्वेश्चन उसका बड़ा पॉइंटेड था. फिर से पूछ लो. जब पहली No, I बार would point. पॉइंटेड पूछ ले निकल जाएगी बात कहीं की कहीं. जल्दी पूछ. See, thing is, very quickly you realize that's no big deal. And people who take themselves too seriously, they end up losing the perspective of the world. You are just another person, and that's how the ability to laugh at yourself. And I think it's a decent thing to do. That I do not laugh at your shortcomings. I would rather laugh at my shortcomings. So what happens is that it makes me aware of all the time of my shortcomings. So there is a possibility that I might correct myself. So I think that very quickly you realize that, and it has nothing to do with age or it has nothing to do with experience. It is something which either you find in your environment or you're a person like that. Some people, they might be 80, Yeah. but they still make that. From my point of view, that's a mistake. From their point of view, it's not a mistake. It's as simple as that. Right. I think that one of the most difficult genres is to be able to do slapstick comedy, which I feel all of you do amazingly well. But I have to mention Johnny sir. आपका मुकाबला उस मामले में I think आज भी कोई नहीं कर सकता. The way you can just make us laugh
with your facial expressions. Like I just go to your Instagram sometimes and I'm just looking at something and I just laugh on a dull day, and I think that is amazing. But I read one of the interviews where you mentioned that आज आपकी जो brand of comedy है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है in Hindi cinema. Do you miss that, or do you feel that we are slowly getting back to experimenting and you all getting the kind of roles that you really want to do? अब तो डिपेंड करता है राइटरों पे। तो पहले क्या था, थोड़ा था कुछ हमारे कुछ डायरेक्टर्स थे, हम तक करवा के लेते थे, हमें वो आइडिया देते थे और कुछ हमसे निकलवाते थे तो निकल आता था। आज क्या है, थोड़ा कम हो रहा है, टाइम नहीं है किसी के पास, एक्चुअली टाइम नहीं है किसी के पास। ना फिल्म बनाने वालों के पास टाइम है और ना देखने वालों के पास टाइम है। भाई फिल्म देखिए आपने, बोले आधी गाड़ी में देखिए, आधी घर में देखिए, आधी ऑफिस में जाके देखिए। ये हो गया है, ना लिखने वालों के पास टाइम है, डायरेक्टर के पास टाइम है। अभी तो क्या है कि पहले की बात करेंगे तो गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली, 100 डेज, फलाना डेज, 50 डेज। अभी फ्राइडे सैटरडे संडे में कमाल दिखाना है। ये 3 दिन के अंदर जो भी ये दिखाना है तो बोलता है चलना है, निकल जाएगी, इतना कौन देखता है यार, निकल जाएगी यार, 3 दिन में करने का, चलना। हाँ ये वो बहुत हो गया, बढ़िया, निकल जाएगी, ऐसा कर रहे हैं। तो उसमें ये बात तो है। अब आज भी अगर एक स्क्रिप्ट से मोहब्बत करने वाले कि नहीं यार मैं ऑडियंस तक पहुंचा दूंगा यार, ऑडियंस याद करेगी यार, ऑडियंस को हंसाना है, ये नियत लेके आ जाए ना डायरेक्टर्स, तो फिर वो चीजें आएंगे, वो हमसे भी निकालेंगे। टाइम नहीं है। तो आप लोगों से मैं विनती करूंगा कि उन डायरेक्टरों को बोलिए प्लीज आप समय निकालिए अच्छी फिल्म बनाने की। सर आप नहीं जानते मैं कितना ये बोलना चाहती हूँ, रिएटरेट करना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसी फिल्म बनाए जो हम लिटरली खुल के हंस सके। इसकी वजह से ना पिक्चर कम प्रोजेक्ट ज्यादा बन रहे हैं, पिक्चर नहीं बन रही है। And Bhavna, one more thing, that I don't know whether he said that. इन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था या जो भी आपने कहा कि इनकी टाइप की कॉमेडी, इनकी टाइप की नहीं है। See, it's always the thought in comedy which works. जैसे एक आप ऑब्जर्वेशन देखिए, जॉनी भाई का मिमिक्री बहुत लोगों ने किया, स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत लोगों ने। Why he became a legend? क्योंकि इनके उसमें एनेक्डोट्स होते हैं, इनके उसमें एक्सपीरियंसेस होते हैं। इन्होंने भी एक बात बोली, जस्ट थिंक ऑफ दिस लाइन, कि आजकल ना भाई पिक्चर बनाने वाले के पास टाइम है ना देखने वाले के पास टाइम है। कि भाई मैंने आधा घर पे कंप्यूटर पे देखा, आधा मैं कार में देखूंगा, आधा मैं ऑफिस में देखूंगा। सो नाउ सी दिस इज एक्चुअली अ रियलिटी एंड यू कनेक्ट विद इट। सो आई डोंट थिंक दैट ही विल एवर बी outdated or anything, because the scripts are outdated in today's time, I feel. नहीं हमको मोहब्बत है इसलिए अब तक टिके हुए। नहीं हाँ मोहब्बत है, he is connected with the world and in his comedy everything what he does there are experiences that makes you laugh. I agree. Actually more than the sound he uses or the expression he uses, it is what he says is more funny. Yes, you know, so Johnny भाई का ये खासियत है। I think for me it's a combination of everything together. Like I don't know, I will go on I can just talk and talk when it comes to this. Dinner मंगवा लो भाई, dinner. You're like Osho here. No, but He's given us. लेकिन आपको So well you've spoken today on पॉपकॉर्न में आपको कोई चीज की कमी नहीं होगी। वही उम्मीद है, आपको क्योंकि ये शिकायत नहीं पूरे होगी। स्टॉलवर्ड्स एक साथ आए हैं तो मतलब उसका कुछ तो होगा ना हमारे लिए। ये कौन वालों का पॉप है। सबको टोपी लगाने वाले। But Chunky, for you as well, what because comedy is something when you write it on paper and when you execute it can be completely different depending on how you interpret it, right? What clicks for you on a script level to be able to say yes? Because comedy जो आपके लिए comedy है शायद किसी और के लिए ना हो. So how do you decide whether this is a good comic piece? For me, मैं समझता हूँ कि जब मैं नरेशन सुनता हूँ, लाइक मैं नरेशन सुनना पसंद करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट कभी कुछ पढ़ता नहीं हूँ, और मैं बोलता हूँ सिर्फ मेरा रोल सुना, मुझे कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब डायरेक्टर उसको नरेट कर रहा है तब मैं उसके आंखों में वो मोहब्बत देखना चाहता हूँ इस कैरेक्टर के लिए। अगर कहीं ना कहीं उसको प्यार है इस कैरेक्टर के साथ तो मैं कर लेता हूँ। देन आई डोंट थिंक 2 सीन है, 1 सीन है चलेगा, बिकॉज इफ द डायरेक्टर लव्स दिस कैरेक्टर फिर कोई रोक नहीं सकता है। राइट और रॉन्ग जॉनी भाई? So I don't listen to script. I only hear my role and the love for the director for that role. Jamie,
आपके रील्स तो मैंने काफी देखे हैं जॉनी सर के साथ ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग एंड यू आर अ वंडरफुल आर्टिस्ट योरसेल्फ बट व्हाट इज इट like to collaborate with him on a project like this where you're actually playing characters where you're actually like यहाँ पे बाप बेटी नहीं है यहाँ पे एक character play कर रहे हो आप तो what was that experience like? It was fun because every time I'd come on set, he wouldn't know what I was playing that day. So he would just look at me and be like, "अरे ये क्या है?" अब मैंने देखा हुआ है, ये क्या हो गया? कभी भाई, कभी एक बार तो कंपाउंडर बना दिया था मुझे सर ने. तो it was very fun and exciting. You know, it was just so exciting. Every day was a new day, new experience, fun things, and a lot to learn from all the senior artists. So it was really exciting. And also with Daddy, ये पहली बार हुआ है जब हमने screen space share किया है. हमने पहले इससे पहले नहीं काम किया. Houseful 4 but आप लोग अलग Houseful 4 में लेकिन हमारे 200 years apart. सीन्स अलग से शूट हुए थे. तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिला था मुझे कभी. बट इट वाज नाइस, यू नो, ही जस्ट it was good because he let me be, you know, and he saw me as a co-actor. And you know, initially I think वो थोड़ा सा था कि I want to protect my daughter and you know I want to make sure she does well. But then I think जैसे हम काम करते गए, he just let me be and he let me do my work. So I really enjoyed that, you know, let me grow as an artist and just help me out a little bit also. अच्छा इसको ऐसे कर, उसको वैसे कर. So it was a fun experience overall. I'm really excited to see what you all bring to the table, but because मैंने अभी तक नहीं देखे episodes, but I have to watch it. Kunal, you have done comedy before as well, and you've been experimenting with different kind of roles. आपके लिए क्या click होता है जब भी, क्योंकि whatever comedy I've seen of yours, everything is still different from each other. Like a loot case for me is very different from Koolmal, you know. So when Popcorn came to you, what were you looking for in that character for you to say yes? Actually, I wasn't looking anything in a character for me to say yes. Firstly, I wanted to just understand what he wanted to make. I'm a big fan of Farhad Samji because I think he's a wonderful talent. He's a great actor. He's a superb writer. And he really works on his craft day in and day out. He's a very hardworking man. And because I'd worked with him on Golmals, I've seen him. And उसके नरेशन में उसको कहता हूँ कई बार पिक्चरें उसके नरेशन तक नहीं पहुँच पाती हैं, इतना अच्छा नरेशन होता है उसका. So when and he had told me about this idea that he wanted to do, and it's a really nice idea. और मैंने जब वो एपिसोड सुने and I heard them like really in the beginning जब अभी भी काम चल रहा था, the thought was very nice. And the fact that he would be bringing in such a cast together, all of these things put together was something that I was very excited to do. And like you said कि हर एक कॉमेडी अलग होती है. We understood, ऐसा नहीं था कि मुझे लग रहा था कि किसी और तरह की कॉमेडी बना रहा है या उसने एक्सपेक्ट किया कि अब मैं इसमें उस तरह की कॉमेडी करूंगा. We were in sync with what we wanted to do, and that's how this journey began. And today we are sitting and promoting this show that's going to come out on the 17th of March, and I'm very happy that I did it. I really enjoyed myself thoroughly. I can now only hope that people see that enjoyment and they also enjoy the show as much as we enjoyed making it. I'm sure they will, but also tell me, how was it shooting for the song? Because it's so funny. The choreography is so funny and the lyrics are like... तेल निकल गया, वो एक दिन में किया है ना. वो कुछ ऐसे 7-8 घंटे में किया है. उसमें कव्वाली है, उसमें कोरियोग्राफी है, उसमें पूल में भी फेंका है, उसमें मतलब उसमें तो ऐसा लग रहा था भाई दिन खत्म हो जाए, सूर्य दिन निकल जाए जल्दी. लेकिन मजा भी बहुत है. And you know, all is well that ends well. I really like the way that it's shaped up and the way it's looking. तो सभी ने उसमें कुछ ना कुछ योगदान दिया है. थोड़ा बहुत तो है. और no, it's just been really like you know, we say it quite a few times when we say that sometimes you do projects where you feel like you're being paid to have a good time and you're being paid to have a vacation. I think this is one of those where I can say that I really cherished each and every day that I got to spend with all of them. Yeah, now I'm coming to Nupur finally because this is your first project that is coming out, like an acting project, and I'm very happy because I know फिलहाल में जितना थोड़ा बहुत हमने देखा था, really impressed. You know it, we have spoken. But I want to know now, first project, which is a comedy project. Comedy is very difficult to pull off. Are you nervous about this because you are like paired and you are co-starring with stalwarts in the industry when it comes to this genre, you know, and what was your first day like? Like, were you intimidated by any chance? I think when I went on set, I was pretty scared. I was nervous because comedy बहुत easy लगती है on screen. Yeah. बहुत smooth लगती है. It's very easy breezy, but it's मैं इतनी experience नहीं हूँ, but still जितना भी काम मैंने किया है, this was my third project जो सबसे पहले आ रहा है actually बाहर. I think it's the hardest. It's the hardest thing. Like it's the hardest emotion. It's the hardest
space to be in. And मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने सारे experienced लोग comedy में, I don't know how I'll do. But I learned, I think on set I learned from all these people कि it's also more about being receptive to the other person. Yeah. And it's also more about expressions. Like I learned this so much from Johnny sir, that it's genuinely a lot about expressions. And वो अपने एक-एक expression से कैसे खेल जाते हैं. I was just observing him. And Saurabh sir is playing my dad in the show. And I remember we had a couple of scenes, and he used to guide me because he's very good at improvs. So he used to guide me कि इसको हम ऐसे कर, आपने किया था, आप भूल गए हो. पता भी नहीं चला सर. जबरदस्ती तारीफ नहीं करनी, सच्ची में गुरु दक्षिणा मांग लो सर. But yeah, so उसके बाद he really like guided me कि इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं and all. So it was, मुझे भी लग रहा था that I'm growing. मुझे ऐसा लगता है कि आप नए हो तो the best thing that can happen to you is कि आप जिनके साथ काम कर रहे हो वो अगर बहुत अच्छे अपने काम में, आपका काम आप जितना दे सकते हो उससे ज़्यादा ही दिखेगा definitely. तो first day was a little intimidating, but not from their end. Like it was just internal, which was there. But I think एक point के बाद I left it. I mean, I just thought that मैं मस्ती करूँगी set पे because that was the vibe on set. Okay, but I also want to know from you all now, because Bollywood में हमने इतने सारे comedy scenes देखे हैं which are like highlights, right? But if I had to ask you all to pick that one scene which looked very easy on screen, maybe in your career, in your filmography, you know, but it was the hardest to pull off, like, you know. वो ना किसी और का. मतलब आपके ऊपर है वो, क्योंकि I feel that sometimes आपने you किसी feel... और एक्टर को देखा है कि इसकी पटी पड़ी है अभी, लेकिन ये स्क्रीन पे अच्छा लग रहा No, था. but like, No, you know... what is the question? Like, No, like something that कि you one, did. one comedy Something you scene... did or You. or you Your- liked your- somebody's performance? No, no, आपका कोई काम. आपका कोई काम जो आपको ऐसे जो स्क्रीन पे मतलब बहुत मक्खन जैसा निकल गया, लेकिन आप बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए. Very well. He'll be the boss in that. कौन सा बन? He's just thinking. few hours later. तो आपके लिए डिफिकल्ट था प्ले करना. स्क्रीन पे बहुत इजी ये गोलमाल, हाँ. गोलमाल फर्स्ट, पहला गोलमाल, फिर सेकंड वाला क्या था वो, फिर गोलमाल है, गोलमाल रिटर्न. गोलमाल again the second. गोलमाल again. Golwal again was the part 2. हाँ, पहला गोलमाल, उसमें वो भूलना उलना जो था ना, वो पहली बार क्या था, वो भूलना फिर वापस आना, वो मेरे को इतना मैं परेशान था जिसके हद नहीं. मैं शूटिंग में बड़ा परेशान था, भूल के भूलना फिर आना कैसे, उसको बराबर, वो भूल जाते थे. हाँ वो बराबर सेट होना चाहिए ना, बराबर मिलना चाहिए, वो सुर में आना चाहिए. वो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी. मैं सेट पे परेशानी रहता था, कैसे करूं. वो करके निकल गया. अब मुझे ये नहीं मालूम था कि कैसे किया, कि अब कैसे निकलेगा, स्क्रीन पे कैसे आएगा, क्या आएगा. डबिंग भी की, फिर भी नहीं लगा. जब लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोग बोलने लगे भूला, पप्पी भाई, वो फिर मेरे को अरे यार चल गया, बच गया, निकल गए, निकलो पतली गली से. What about you, Saurabh? So I have only one film in which one character, it was not a comedy. तो फिर पास्ता का कैरेक्टर कितने लोगों के कैरेक्टर्स को मिला के आपको बहुत बनाया? बहुत हमने उसको ओरिजिनल सुजीत कुमार फ्रॉम ग्रेट गैम्बलर, मार्कोनी, फिर माइंड योर लैंग्वेज का एक कैरेक्टर, so 3-4 कैरेक्टरों का मैशअप करके, फिर साजिद खान, साजिद नाडियाड वाला एंड फराज सांझी का भी मैशअप करके, there about 14-15 people in that. Wow. I mean, who would have thought?